Ahead of the Lok Sabha and the state assembly polls in Sikkim, two separate instances of political violence have been reported from the state today. In the first instance, SKM worker Samten Bhutia has been seriously injured in an attack at Soreng. Samten Bhutia has sustained injuries on his head in the attack and has been rushed to the hospital for treatment, sources said. And at the same time, Soreng Chakung SDF candidate AD Subba also sustained injuries in the attack. The SKM and the SDF have blamed one another for being behind the attack. Meanwhile, another incident of violence is being reported from Namchi, where SDF Chief Pawan Chamling was on his way to campaign for party candidates. So this is the big breaking news coming in from Sikkim ahead of the assembly polls in Sikkim. Two separate instances of political violence have come to the fore today. In the first instance, SKM worker Samten Bhutia was seriously injured in an attack in Soreng. Samten Bhutia has sustained injuries on his head in the attack and has been rushed to the hospital for treatment, sources said. At the same time, Soreng Chakung SDF candidate AD Subba also sustained injuries in the attack. Now the SDF and the SKM have blamed each other for being behind the attack. Meanwhile, another incident of violence is reported from Namchi, where SDF Chief Pawan Chamling was on his way to campaign for the party candidates. I have my colleague Prakash Adhikari joining me over the phone line now. Prakash, a lot of political violence, a lot of attacks are happening in the state of Sikkim in the run-up to the assembly and the Lok Sabha polls as well. Now, what is the police, what action is the police and the district administrations, respective district administrations taking? What steps are they taking to prevent this violence? चिपेन सिक्किम में अभी दो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है अभी एक सोरेंग में जहां पर एसकेएम सुप्रीमो प्रेम सिंह तामांग खुद कैंडिडेट है। सोरेंग चाकुंग उनका होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां पर एसकेएम और एसकेएफ के वर्कर्स के बीच में एक वायलेंस हुआ है और इसमें एसकेएम के एक सामतेन भुटिया बोल के एक एसकेएम सपोर्टर्स इंजर्ड हुआ है। तो दूसरी तरफ एसडीएफ के जो कैंडिडेट है डॉक्टर एडी सुब्बा भी इंजर्ड हुआ है। इसमें ब्लेम गेम चल रहा है कि एसडीएफ बोल रहा है कि एसकेएम ने अटैक किया, एसकेएम बोल रहा है कि एसडीएफ ने अटैक किया, मगर ये इन्वेस्टिगेशन के बाद है कि किसने अटैक किया। मगर वायलेंस हुआ है सोरेंग में। और इसी तरह अभी नामची में भी एसडीएफ सुप्रीमो पवन चामलिंग का एक रैली था नामची बाजार में, जहां पर पोकलो कामरांग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो खुद कैंडिडेट है और नामची सिंगिथांग के लिए बिमल राय है। तो दोनों के लिए एक पब्लिक रैली वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था और उस पब्लिक रैली में एसकेएम के सपोर्टर्स से डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, ऐसा एसडीएफ का क्लेम है। तो नामची और सोरेंग दोनों जगह पर अभी पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है। Yes, Prakash, now we have received the visuals of the attacks, the victims who were allegedly attacked by another political party. Now, what is their condition? Because judging from the visuals that we have received, which for some reasons, for protocols, we cannot show it to our viewers, but what is their condition? How is their condition, Prakash? जी हाँ, जो एसटीएफ के जो कैंडिडेट है डॉक्टर एडी सुब्बा सोरेंग चहंग के, वो अभी सोरेंग जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर एडमिट है। और उसी तरह एसकेएम के जो सपोर्टर्स है सामतेन भुटिया वो भी हॉस्पिटलाइज है। तो एसटीएफ का कैंडिडेट डॉक्टर एडी सुब्बा भी हॉस्पिटलाइज है। अभी उनका हेल्थ कंडीशन कैसा है वो अभी क्लियरली बताना मुश्किल है। और उधर दूसरी तरफ एसकेएम के सपोर्टर सामतेन भुटिया भी एडमिट है। मगर नामची में इतना बड़ा वायलेंस नहीं हुआ है। एक दूसरे को रोकने की कोशिश की गई एसटीएफ को रैली पर, मगर सोरेंग में दो अभी इंजर्ड की खबर है। इसमें एसटीएफ के जो कैंडिडेट है डॉक्टर एडी सुब्बा वो इंजर्ड है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो एसकेएम के सपोर्टर सामतेन भुटिया भी एडमिट है। Yes, Prakash, lastly, now a lot of political violence takes place in Sikkim. Now, what steps can be taken to ensure that these instances of violence can be brought to an end immediately? What steps can be taken, Prakash? जी हाँ, इसमें अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या एक्शन लेगा ये अभी देखने वाली बात होगी। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से कोई स्टेप नहीं लिया गया है, मगर
जो पॉलिटिकल वायलेंस बार बार प्री पोल वायलेंस सिक्किम में हो रहा है, और इसको लेकर जो सेंट्रल जो फोर्सेस है वो तो सिक्किम में अभी लगाया गया है, मगर इसको लेकर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या एक्शन होगा वो देखने वाली बात होगी। That's right. Prakash Adhikari, thank you so much for all the updates. Now, we shall be coming back to you in our later bulletins.